अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं जनाब? ठीक हैं, खैरियत से हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। उम्मीद करती हूँ आप सब भी खैरियत से होंगे। जी जनाब, पिछली क्लास में हमने की थी रीडिंग अपने चैप्टर नंबर 14 के कुछ पार्ट की। तो कैसी रही रीडिंग की प्रैक्टिस? आपने की रीडिंग, उसकी टीचर को वॉइस रिकॉर्डिंग भेजी? वेरी गुड। आज आगे बढ़ते हैं और आज हम मज़ीद इस चैप्टर से कुछ पार्ट रीड करेंगे। तो जनाब जल्दी से बुक ओपन कर लीजिए और आ जाइए पेज नंबर 144 पे। 144 पे हमारे चैप्टर नंबर 14 का ही कुछ हिस्सा मौजूद है। हम यहाँ से रीडिंग स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 144 से। तो चलें, बुक ओपन हो चुकी है, सामने है। वेरी गुड, फिंगर रखिए और मेरे साथ रीड करना स्टार्ट कीजिए। जी चलें पढ़ें फिर। 4 सीजन्स। 4 सीजन्स। The season is a division of the year marked by the changes in weather, ecology, and amount of daylight. On Earth, seasons results from Earth's orbit around the Sun and Earth's axial tilt. Earth's axis is an imaginary pole going right through the center of the earth from top to bottom. The rotation of the earth on its own axis causes day and night. But the rotation of the earth around the sun causes the change in the season. It is the fact that Earth is lopsided, leaning to one side. Earth has seasons because its axis does not stand up straight. As the Earth moves in its path around our stars, there are times when a certain part of the planet comes closer to the sun. If the axis of the earth is pointing towards the sun, that hemisphere can expect summer. If the axis of the earth is pointing away from the sun on the earth's yearly trip, that half of the planet will see winter. आगे पढ़ें, चलिए पढ़ते हैं। Seasons are based on the rotation of the planet around the sun. The season change at the same time every year, though the two halves of the planets experience opposite season. There are 4 seasons: summer, winter, autumn, and spring. Seasons change on or around the 21st of 4 months: June, September, December, and March. In the northern hemisphere, December begins the winter season. March brings on spring. June marks the start of summer and September gives autumn weather. In the southern region, the opposite is true. आगे बढ़ते हैं, अब आ जाइए पेज नंबर 145 पे। अब यहाँ पे हम करेंगे रीडिंग इस पार्ट की भी। Weather and climate. Weather and climate. Weather. Weather is the condition of the environment at any time, such as the temperature, cloud cover, fog conditions, air pressure, and humidity. For example, today's weather is sunny with a clear sky, and tomorrow there might be clouds and rain. Climate is a long-term pattern of weather conditions. It is the average pattern of the weather conditions taken over a period of time, like decade for a particular region. Do you know what climate changes have been taken place in Pakistan in 20 years? You might not know the answer to this question, but your parents must have an idea about this change. If we sum up these two terms, we can say that
weather of a particular region keeps changing every day depending on temperature, rainfall and wind conditions. But the climate would show long-term behavior of the weather in that region. चलें, आज हम इतनी ही रीडिंग करते हैं अपने इस चैप्टर की, लेकिन आपने रीडिंग स्टॉप नहीं करनी है, आपने कंप्लीट पूरा चैप्टर खुद रीड करना है, वॉइस रिकॉर्डिंग बनानी है रीडिंग की और वो भी भेजनी है अपनी टीचर को। तो चलें आप चैप्टर को रीड करें और मुझे दे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।